बाबा साहब ने इस संसार में आके जो एक अनुपम काम किया, हम आज उसके ऊपर हमें आज जरूर विचार करना चाहिए। बाबा साहब ने हमें क्या क्या दिया। बाबा साहब के यदि हम टोटल उनकी रचना के बारे में बात करें तो उन्होंने सबसे पहले तो हमें संविधान की रचना करके दी। ऐसा संविधान जो सभी को बराबर का हक देता है। एक ऐसा संविधान जो भिक्षु के विनय के आधार पर बना है, जिसमें 5 सील प्रमुख हैं। 5 सील ही हैं जो संसार में शांति कायम करते हैं। तो ऐसे संविधान की बाबा साहेब आंबेडकर जयंती વિશે હું લોકોને આપણે એમ જ કહીએ છીએ કે આપણે બધા બાબા સાહેબ જયંતી ઉજવીએ છીએ, પણ બાબા સાહેબનું જન્મ જયંતી આપણે લોકો બધા ઉજવી રહ્યા છે, પણ એનું ઉજવવાનું રીઝન શું છે આપણે બધા જાણીએ છીએ? નથી જાણતા। જેમણે સંવિધાન બનાવેલું છે, આપણે સંવિધાનને હાલની તારીખમાં એટલું બધું અવકારીએ છીએ ને, મીન્સ કે બસ અવગણતા નથી, પણ આપણે જે છે સંવિધાનને આગળ લઈ જવાનું છે। અને બાબા સાહેબે કીધું છે કે શિક્ષિત બનો, સંગઠિત કરો અને સંઘર્ષ કરો। તો આપણે સંઘર્ષ ક્યારે કરી શકીશું? જ્યારે આપણે પોતાના એમના લખેલા જે બંધારણ છે, જે સંવિધાન છે, પહેલા આપણે સંવિધાનને વાંચવું પડશે, સંવિધાનને સમજવું પડશે। आज विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर ने 134મી जन्म जयंती निमित्ते यंग बुद्धिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया तरफथी भीम ज्योत रेलीनी योजना आयोजन अमे करेल हतो। आ आयोजन कार्यक्रम में अमे पंचशील बुद्धिवारथी जय घोष साथे भीमना जय घोष नारा साथे अहींया बापूनगर पोलीस स्टेशन भीम सर्कल जोड़े में आ बाबा साहेब नो 134मो जन्मदिवस बहुत धूमधाम थी हर्षोल्लास थी मनावेल छे। अने आ जन्मदिवस नो सभी बहुजन अने आंबेडकर जनता ने सप्रेम जय भीम।